अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से आज आपके सामने हाजिर हूँ और आज एक नए टॉपिक लेकर। और आपको पता होगा कि हम वाटर पढ़ रहे हैं और वाटर वाटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। ये हमने पिछले कई लेक्चरों से देखा है और इसको कैसे कंजर्व करना है। पहले मैं बता दूं कि आज जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8th के लिए। बुक का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये सोशल साइंस की बुक आई है। तो इसका चैप्टर नंबर 2, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने सॉइल कंप्लीट किया, अब हम वाटर पढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं। तो वाटर में हमने वाटर की इम्पोर्टेंस पढ़ी, वाटर कितना है और फ्रेश वाटर कितना है, ये सब कुछ हमने पढ़ा। और साथ ही साथ मैं ये भी पढ़ा कि वाटर जिस तरह जो ज़मीन पर मौजूद है, ना इसको हम कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। फिर भी फ्रेश वाटर की कमी हमें महसूस होती है और उसकी वजह क्या है। तो वजह ये है कि हमने जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको पोल्यूट किया। ये सब कुछ हमने पढ़ा। और हमने ये भी देखा कि एक रीजन है वर्ल्ड में जहाँ पे आपको जो पूरा वाटर है दैट्स नीडेड is to be purchased from the market, because you cannot get it from anywhere, because there is perhaps no fresh water available anywhere in the state. So today's topic is conservation of water resource. It is very important that we should know how to conserve this resource, how to protect our future generation from the scarcity of water. Even today many of the people of the world are facing the fresh water problem. So we need to think, we need to rethink, we need to develop a sensible attitude. We need to develop a rational understanding so far as water resources concerned, because if we will not do it, then unfortunately it it will have a bad consequence on human life as a whole, as on human beings and life as a whole. So for that, we today's topic is very important. It is about conservation of water resources. Now we have done all these things. Now we what we have to do, what we have to do to conserve our water resource. If we have polluted our water bodies, if we have done all these things, if we are on the way of destruction, how can we manage to protect ourselves, to stop ourselves from further degradation. So this conservation of water resource is very helpful insofar as understanding how to improve our doings, how to rethink our way, how to rethink our attitude, how to rethink and change our attitude uh, towards this natural blessing that is water. So let's go to the portion of the chapter. You would be seeing bold letters right below the live video, conservation of water resource. Let us start it from there. Access to clean, educate water. Access Uh, to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. Steps have been taken to conserve this dwindling resource. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. A discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals, and industrial effluents in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrates, metals, and, and pesticides.
Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water. Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि आप अब ये जो वाटर है एक तरह से हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. That means we can renew it. It gets renewed naturally through water cycle. You must have gone through water cycle. But the problem कहाँ पे है? प्रॉब्लम है कि हमने जो जो इसके रास्ते हैं, इसके इसके जो मरकज़ है, उनको पोल्यूट किया है. और हम इसका बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस वजह से जो है ये वाटर जो है fresh water. I'm talking about fresh water. Whenever I will use the word water, you should think about fresh water, drinking water. तो इस वजह से क्या हो गया है, इस वजह से जो है वाटर जो है ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है कि हम इसको यूज़ करें. तो इसकी मिसाल आप अपने गांव में कहीं भी देख लीजिए, जो भी नदी आपके गांव से गुजरती है, जो भी पानी आपके गांव में है, आप देख लीजिए उसमें कितनी गंदगी हमने डाली है. हमने टॉयलेट आउटलेट्स उसमें डाले हैं. तो जो भी गंदगी हम अपने सहन में, अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, हम उसको उठाकर फिर नदी में डालते हैं. ये हमारा एटीट्यूड है, ये हमारा सफाई का कंसेप्ट है. तो फिर पानी जो है, पानी गंदा हो जाता है, फिर उस पानी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. खैर, इससे भी बड़ी बड़ी पोल्यूशंस होती है, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ है, उनमें जो भी वेस्ट निकलता है, तो वो वेस्ट सीधे पानी में जाता है. या फिर जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, वो भी अल्टीमेटली पानी में चला जाता है. तो जब ये केमिकल्स पानी में पहुंच जाते हैं, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं मोस्ट ऑफ देम. तो ये हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं थ्रू वाटर, क्योंकि हमें पानी पीना है. जब हम पानी को इस्तेमाल करते हैं, यही केमिकल्स हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, और फिर हमें बीमारी का सामना करना पड़ता है. खैर, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इस चीज़ को हम रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं. लेकिन उसके लिए हमें जो भी हम ये पोल्यूटेंट्स जो भी है, चाहे इंडस्ट्रीज से निकल रहे, चाहे हमारे डोमेस्टिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जिस किस्म की भी वेस्ट्स हैं, अगर हम उसको अच्छी तरह से जो ट्रीट करें, जिस तरह उनको करना चाहिए, तो तब हम इस चीज़ से बच सकते हैं. Forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. Water harvesting is another method to save surface runoff. The canals used for irrigation field should be properly lined to minimize loss of water seepage. Sprinklers effectively irrigate the area by checking water loss through seepage and evaporation. In dry regions with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. सबसे पहले अगर हम देखें कि ग्राउंड वाटर जो है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है सो फॉर एज ड्रिंकिंग वाटर इज़ कंसर्न. हमारे ट्यूब वेल्स जो है, हमारे वेल्स जो है, कुएँ जो है, उनसे जो भी पानी हम हासिल करते हैं वो ग्राउंड वाटर होता है. यानी ज़मीन के नीचे जो पानी होता है वो काबिल इस्तेमाल होता है, और उसको हम ट्यूबवेल या हैंड पंप जिनको हम कहते हैं उससे निकालते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं. या कहीं पर कुआँ है, तो वहाँ से जो पानी है उसको हम इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अक्सर बहुत सारी जगहों पे देखा गया है कि ये ग्राउंड वाटर जो है, इसकी हम ये भी कम होता जा रहा है. और इसकी वजह है रन ऑफ. जब बारिश होती है, तो पानी जो है वो चला जाता है, वो कहीं पे रुक नहीं जाता है,
کیونکہ ہم نے ویجیٹیشن کور جو ہے وہ ختم کیا ہے، فارسٹس ہمارے ختم ہو رہے ہیں۔ اس ویجیٹیشن کور کی وجہ سے، ان فارسٹس کی وجہ سے جو کیا ہوتا تھا کہ جب پانی برستا تھا، جب بارش ہوتی تھی، تو یہ پانی جو ہے یہ ویجیٹیشن کور جو ہے یہ اس پانی کو روک کے رکھتی تھی، اور پھر یہ پانی جو ہے آہستہ آہستہ زمین کے اندر چلا جاتا تھا۔ لیکن اب اس کو ویجیٹیشن کور ہی نہیں، کہیں پہ پلانٹس ہی نہیں ہے، تو یہ سیدھے چلا جاتا ہے رن آف۔ تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، یہ جو گراؤنڈ واٹر ہے اس میں کمی آئی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی تھوڑی سی گرمی بڑھ جاتی ہے تو ہمارے ٹیوب ویلس کا پانی جو ہے وہ چلا جاتا ہے، یا ہمارے کنویں جو ہے ان کا پانی ختم ہوتا ہے۔ دس از دا پرابلم بیکاز what we have done with the forests and the vegetation cover۔ تو اگر ہمیں اب اس چیز کو روکنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پلانٹیشن کرنی ہے، اور ویجیٹیشن کور جو ہے وہ انکریز کرنا ہے۔ دوسری بات، واٹر ہارویسٹنگ از اندر میتھڈ ٹو سیو سرفیس رن آف۔ واٹر ہارویسٹنگ بھی ہم کر سکتے ہیں، جس سے ہم سرفیس رن آف واٹر جو ہے اس کو جو ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں ہم، اس میں ہم بڑے بڑے گڈھے جو ہے زمین کے اندر کھودتے ہیں، تو پھر جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی جو ہے ان میں جمع ہوتا ہے، تو ہم اس پانی سے بہت ساری جگہوں پہ یہ بہت پہلے سے ہے، لوگوں نے ایسے ہی سوچا تھا کہ جب جو بھی جن کے میوے کا بزنس ہے، میووں کا بزنس ہے، تو وہ اپنے باغوں میں کیا کرتے ہیں، ان باغوں میں جو ہے ایک بڑا سا یہ پٹ بناتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہ پٹ وہاں پہ بناتے ہیں جہاں پہ پانی جو ہے کی ڈائریکشن جو ہے وہاں کی طرف جب ہوتی ہے، جہاں پہ جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ پانی کی ڈائریکشن اس طرف ہے، وہاں پہ وہ گڑھا بناتے ہیں۔ پھر جب پانی ہوتی ہے تو اس میں پانی بچ جاتا ہے، تو پھر اس پانی کو ہم جو ہم سپرے کرتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ پر اریگیشن فیسلٹی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اور دوسرا، یہ تو ہو گیا دوسرا۔ تیسرا، the canals used for irrigation fields should be properly lined to minimize loss by water seepage۔ اب پانی جو کینالز ہم اریگیشن فیسلٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان میں جو وہ اچھی طرح بنی نہیں ہوتی ہے، پراپرلی لائن نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے بہت سارا پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے اس نہر میں سوراخ ہوتے ہیں، وہ پانی ان میں سے ان سوراخوں سے چلا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بہت سارا پانی جو ہے لاس ہو جاتا ہے، اور ہمیں اریگیشن میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اسپرنکلرس افیکٹولی اریگیٹ دا ایریا بائی چیکنگ واٹر لاسز through seepage and evaporation in dry regions with higher rates of evaporation. Drip or trickle irrigation is very useful. The valuable source sorry the valuable water resource can be therefore conserved by adopting these means of irrigation۔ اب جہاں پہ ڈرائی ویدر ہوتا ہے، جہاں پہ ڈرائی ریجنز جو ہوتے ہیں، جہاں پہ ہائی ریٹس آف ایواپریشن ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، وہاں پہ ظاہر سی بات ہے زیادہ ایواپریشن ہوگا، وہاں پہ اریگیشن جو ہے اس کو وہ آپ نے نیچے پکچر دیکھی، آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہ والی پکچر، یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے، دس از دا وے۔ ٹرکل اریگیشن اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے ایک پائپ ہو، اور پائپ سے پانی جو ہے وہ بہت ہی بڑا ایریا کور کرتی ہے،
इरिगेशन में, जब जब इस तरह से हम पानी इरिगेट इस तरह से इरिगेट करें अपनी फील्ड्स को। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से वो ऑपरेशन जो है उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल होता है। वो ऑपरेशन से जो पानी ज़ाया होता है वो भी बच जाता है, और साथ ही साथ में हम इन जो ये मेजर्स हम करेंगे तो इससे हम आ, जो है पानी को बहुत बचा सकते हैं। तो ये तो था वाटर। यहाँ तक कि हमने वाटर में क्या पढ़ा, वाटर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और वाटर जो है किस तरह हम ज़ाया करते हैं, और किस तरह हमने जो है वाटर को जो है कंज़र्व करने की ज़रूरत है, वरना ये प्रॉब्लम जो है हमारे लिए आगे जाकर बहुत ही भयानक साबित हो सकती है। इस वजह से हमें वाटर जो एज अ रिसोर्स, एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम नेचर जो है, इसको हमने कंज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो in future we will face the problem. Even today we are facing the problem of fresh water. You will see in functions you use water and you get it from markets. So that's what this is, because we don't have good quality of water at home. I mean, clean, safe drinking water at home. Earlier, when we were in childhood, we used to see streams that were clean, canals that were clean, and that were used for the water. The water from them was using for drinking, washing, and everything, and that was very clean and safe for drinking as well. But today, unfortunately, if you will find a canal in a village, you will find it as a dumping. You will find it a dumping site where every waste will be on the banks of the canal, and even in the canal, and bathroom outlets will you will be seeing in canals. So this water, you cannot think of tasting the water from that canal. So we in this chapter, in this portion, we have learned so many things. We have learned that it is not good. It will affect us. Uh, it will affect our health. It will affect our economy in the long run, uh, mm, because we are not using it in a proper way. So this was all about water. This was all about polluting water as a natural blessing, and then polluting it, and then seeing its consequences, and then how to preserve it. The main thing what we have to do is we have to start planting trees. We have to protect our green cover. We have to use water judiciously. We have to think about using less and less water for washing purposes. For we have to think before we open the tap, we have to think that we are actually opening a blessing, and we need to conserve it. If we will not think that way, then obviously it is going to ruin us in the near future. So I pray to Almighty Allah that He give us hidayah in this very aspect as well, so that we will understand the blessing that He gave us, and we will understand the need to protect it, the need of plantation, the need to increase the greenery all around us, and we should also know and understand the concept of cleanliness. We have a different concept of cleanliness, that we will our waste should be away from our house. That is cleanliness, but that is not cleanliness. If you are taking your wastes and putting it in the canal, that is not cleanliness. Instead, it would have been better if it would have been around our house, but not in a canal. So we have to think, that is a secondary, that is a second topic. If we will go in it, it will take time.
So we have to, but we have to think about it that this is not the way we should think about cleanliness. So with these words, I uh, I will be saying goodbye to you this time, and inshallah, next time I will be back with natural vegetation and wildlife, and then we will understand what natural vegetation is, and why is it very important for us, and what is the importance of wildlife for us, why we need to protect our natural vegetation and wildlife. So this will be another important topics insofar as our lives is concerned. I hope you all are taking keen interest in developing an understanding of protecting our environment, protecting our resources, protecting our precious resources, and thinking of pollution-free environment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.